Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh, no. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. हेलो 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 तो आवाज़ आ रही होगी आई थिंक सो। आना तो चाहिए यार। हेलो हेलो लेट्स गो। आवाज़ आ रही है? हेलो
आना तो चाहिए वैसे बाबा। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम। स्क्रीन दिख रहा है सबको एकदम बढ़िया से, कोई सीन नहीं है, एकदम बढ़िया। इसको हम करते हैं मिनिमाइज, इसको करेंगे बंद। आ गए हम अपने जेंशिन द इम्पैक्ट में। इसको मैं एक सेकेंड क्रॉप कर देता हूँ एक बार। चलो जी आ गए। वेलकम टू द स्ट्रीम। जो भी नया ज्वाइन कर रहा है आज, वेलकम टू द स्ट्रीम। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं स्टार्ट करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, अब आवाज़ सही आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो सही आ रही होगी अब आवाज़। मिनिमल पे रखा है मैंने, ज़्यादा हाई पे भी नहीं किया। साउंड तो आ रहा होगा सही सही। वेलकम 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 जी। आज हमने सब काउंट भी लगाया लेफ्ट में, और सब अलर्ट भी मैंने लगा दिया है, तो देखने में आज तो मस्त लगने वाला है दोस्तों। इसको ऑफ करते हैं। बैनर जा चुका है मेरे हिसाब से, एक सेकंड देखूंगा। बैनर जा चुका है, यस बैनर जा चुका है। अभी सिर्फ एक बैनर है जो कि है स्टैंडर्ड विश, और जिन्होंने बिगिनर विश नहीं किया उनके लिए बिगिनर विश है, वो बात नहीं है। आज अपने को करना क्या है? सबसे पहले तो आज डोमेन नहीं खुला हुआ, तो ये जो 179 हमारे पास रेजिन है, इसको हमें यूज़ करना है कैसे भी करके, वेस्ट नहीं जाने देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये करेंगे अपन, और क्या करेंगे, आर्कन क्वेस्ट आगे बढ़ाएंगे आज। ऑफ स्ट्रीम बैठ के मैं थोड़ा बहुत प्रीमोस फार्म कर लूँगा, क्योंकि प्रीमो फार्म करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आफ्टर ऑल। एक सेकेंड, ग्लिच क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? स्ट्रीम मुझे शो नहीं हो रही। हाँ अब दिख रहा है। नाइस नाइस नाइस। जेंडा क्रॉस, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये करना है आज हमें। हम ये सब भी एक्चुअली करके आ सकते हैं। ये सेराई स्टॉर्म चेजर्स करके आना है क्या? 40 मिलेंगे, तो चलो ये करके आते हैं। लेट्स डू दिस। लेकिन यहाँ तक मैं पहुँचूँ कैसे? मेरा खुला ही नहीं है। वाओ, रहने देते हैं भाई, करेंगे करेंगे, टाइम सब करेंगे। स्ट्रीम आज कैसी भाई? क्वालिटी सब मस्त एकदम आ रहा है। कल मैंने बहुत बैठ के एकदम पूरा रिसर्च मारा है इसके ऊपर की। स्ट्रीम कल थोड़ी सी बिगड़ जा रही थी बीच बीच में। आज कोई भी नया सब्सक्राइब अगर करेगा तो यार उसका नाम आएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर काउंट दिख रहा होगा, उसके ऊपर तुम्हारा नाम आने वाला है। अलर्ट्स मैंने ऐड कर दिया आज। ये वाला मेरे से तो नहीं होगा भाई, हार्ड है काफ़ी ये वाला बहुत हार्ड है। ड्रैगन स्ट्राइन में जाके मेरे से कुछ होता ही नहीं है। भयानक जगह है भाई, भयानक जगह। आर्कन क्वेस्ट बढ़ाना है, चलो बढ़ा लेते हैं। आज एक्चुअली ख़त्म ही कर देते हैं। गेम साउंड थोड़ा सा कम करने दो मेरे को, रुको, बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तुम लोगों को। इतना ठीक है। अब सही है। लेट्स गो। कोकोमी से बात करना है। How was it? Did your initiation go smoothly? I'm sure you're playing it down a little. Kotoku and the others put you through your paces, I presume. But with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back,
I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. Too soon for another promotion, I think. I could increase your pay. I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. He expressed a desire to be on the front line, so I honored his wishes. Now, speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several small islands there, often used as a transit point when transporting supplies. Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. Stranger still, the Resistance Army passed by and reported they found no signs of danger. I'd like to task you with getting to the bottom of this. Subscriber It's not alert काम urgent, so कर रहा है कैसे मुझे पता चलेगा यार क्या पता I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the army and also with Watatsumi Island. मुझे पता कैसे चलेगा भाई कि When सब्सक्राइब Teppei अलर्ट returns, काम कर रहा है कि you can नहीं catch up with कि him सब्सक्राइब करेगा and तब ना pick a day when the weather's good to set sail for the islands. अच्छा Is Teppei really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh, Paimon can't help but feel a little worried about him. Oh, why don't we go wait for him at the training grounds? एक सेकंड इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा आ रहा होगा अब ठीक है Long time no see. वेलकम जी वेलकम टू द स्ट्रीम जो भी नया आ रहा है चैट वैट करते रहो मस्त एकदम अब ठीक है एक सेकंड मेरे को बस साउंड चेक करना है एक बार कैसा आ रहा है साउंड सही आ रहा है आज कल से तो अच्छा आ रहा है भाई काफ़ी कल एकदम ही कम आ रहा था लेट्स गो दिख रहा है थोड़े बहुत ट्विक्स वगैरह मेरे को करने पड़ेंगे यार शुरुआत में स्ट्रीम में ना ये प्रॉब्लम होती है आ रहा है डिस्प्ले हाँ आ रहा है चलो बढ़िया ये लेंगे Well, you're in luck, because this season veterans got a few leadership tips for you. Raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to go the extra mile. It's also important to maintain strict discipline at all times, and finally... wait. What was it? What was it? Wow, इसको खुद ही याद नहीं है where'd you learn all that, Teppei? इसको खुद ही याद नहीं है I read it in a novel from the Eye Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't believe how many dongo it took to convince my friend to let me borrow it. You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an army? Pretty sure that's called being an armchair general. Ha ha! That's where you underestimate me. That's right. I'm learning military management on the job now. Just like you. You'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have officially been made the captain of my very own Special Operations Unit. It's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? I spoke to Her Excellency, and she says our uniforms are in production. Let's go collect them together once they're ready. Oh, I can't wait to put them on. We're really gonna look the part. Everything's going great. Our mystery sponsor supplies have really helped turn things around. Will Paimon get a uniform too? Of course. You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance. Yippee! Captain, a new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. All right, I better go. See you again soon.
You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister! I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. This is my time to shine. यार ये टेपे कंपटीशन दे तो रहा है मगर उसको पता नहीं हम ट्रैवलर है. Teppei's been made a platoon captain. He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon War ruins. चलो बिस्किट मैंने खा लिया, अब चालू करते हैं. स्ट्रीम किधर जाने का अपने को वैसे, कितना दूर? अरे भाई फिर इधर भेज रहे भाई. अच्छा हुआ मैंने टेलीपोर्ट वहाँ का खोल के रखा था, वरना सीन हो जाता. बहुत दूर दूर भेजते हैं यार. Slippery ground here is perfect for sliding around on a surfboard. इसको पानी में कहाँ भेज रहे हैं लोग बीच में? इस तरह पे बिजली गिरती रहती है दिन रात. डैमेज आ रहा है, डैमेज आ रहा है. वहाँ जाना है. अरे यार उधर जाने का अपने. तो This should be the place. But Sanganomio is right. investigate the ancient Like ruins. anything suspicious is going on. Could they be hiding? अब कैसे करना है? investigate. These electro monuments look a little suspicious. कैसे करना है भाई इसको investigate अब? शायद से इसको मैकेनिज्म को अनलॉक करना पड़ेगा. इलेक्ट्रो चाहिए. लेट्स गेट इलेक्ट्रो. The threads of your fate lie in my hand. तीसरा गया. अच्छा एक कुछ तो हुआ. यहाँ पे मैं कौवा छोड़ देता हूँ. हो गया. इसको करना कैसे है? मेरे हिसाब से वो चाहिए हमें, वो इलेक्ट्रो वाला जो रहता है. अरे शिट, इलेक्ट्रो कूलर से कनेक्ट कर लिया मैंने. रुको माफ करके रखने दो भाई, सीन हो जाएगा वरना.
इलेक्ट्रो सही है। कैसे कर लेंगे इसको? ओ ये वाला ये रहा। सवाल तुमने कर लिया। हो गया हो गया हो गया। उरे 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 बड़ा आदमी आ गया। ओए भाग। ये तो भयंकर डैमेज दे रहा है। Let's get it on. Need a surfboard? Let's ride. इधर गया। Amazing. Catch an epic wave. अरे भाई आराम से आराम से आराम से। By royal decree. Look alive. मुलानी मरने वाली है। Check this out. Best of luck. ओ फाइनली मरा ये। Glad that's over. As monsters go, that one was pretty tough. But what's such a huge Thunderhelm Lodge Trail doing here in the first place? It doesn't make any sense. Also, the atmosphere here gives Paimon the creeps. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Huh? Teppei, what are you doing here? Wow, this is a surprise. I didn't know you were the ones investigating here. I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to मुझे क्यों लग रहा है investigate, यही so था वो I मॉन्स्टर। thought I'd come and take a look. ₹2 If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. Guess I came here for nothing. Teppei, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Orobashi's remains. Orobaxi? Who's that? A god. Look, there's the corpse over there. Ah, it's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Orobaxi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobaxi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobaxi with the Muso no Hitotachi. फिर That बैंड बजा दी same इन slash सबकी। also formed what later became known as Musojin Gorge. राइडन ने बैंड बजा दी इन सबकी। मेन बात ये है। The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible! अच्छा ये जगह एक स्लैश में उसने बना दिया तलवार से अपने। Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. When Orobaxi attacked civilization, Shogun stood up and put a stop to it.
But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt decree, it's time for someone to stand up and stop the Shogun. All right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Hey, don't worry about me. Peak condition. Teppei sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. चलिए कोकोमी के पास। मैं पहले इसको मैं हेल्थ दे दूँ थोड़ा सा। वहाँ पे कोई है स्टैचू ऑफ द सेवन? हाँ ये रहा। मुलानी का तो हालत खराब हो गया यार। अरे यार मेरा माउस अटक गया, एक सेकंड। लेट्स गो। हेलो कंपाइलर ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। इफ यू न्यू सब्सक्राइब कर देना यार अगर आप नए हो तो। Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! गोरो भाई भी आ गए हमारे। What happened? They look so serious. They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, what's going on? इनको डिजीज हो गई क्या इनके वो सोल्जर्स लोग को? मेरे को लग रहा है वो टेपे को भी वही चीज हुई थी, खास रहा था बेचारा। Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. जो भी नया आ रहा है स्ट्रीम पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। शेयर वेयर छोड़ो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से। इतना सही बस चाहिए मुझे। क्या हो रहा है? मोस्ट हाईवे टाइप्स। हाँ ठीक है ठीक है। So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. हाँ भाई स्टॉप लगाओ। Have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refused to hand them over. Still, I did manage to get one. Do you know something about this? So that means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Forget that. Fatui There's no लोग इनको time. weapons दे रहे हैं Right फ्री now, में। we need to inform the whole army to cease using their delusions दाल में कुछ तो immediately. काला है भाई, पूरी दाल भी काली हो सकती है। Forget that there is no time. ठीक है All चलो। soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. बचा लोगे भाई ट्रैवलर तुम्हारा Speaking of साथ। soldiers with symptoms. No! Surely he can't have... let's go check on... लगता है टेप्पे भाई को भी हो गया है बुखार। जस्ट लाइक मी, मेरा भी हालत खराब है। चलो यहाँ से जाएंगे। एक सेकेंड। You can only do so much on your own, but with a group, anything's possible. ठीक है। इधर जाना है, इधर जाना है अपने को। यार ये जगह कितनी मस्त है यार।
एकदम क्लीन। एक मिनट। रैप्टर भाई तो ऑनलाइन है। टेप्पे कहाँ है बे? आ तो गए अपन। इसके अंदर है? नहीं। ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। और how long is the wait? Does the server go down? Which server, bro? Are you asking for the time schedule for the update? The update will come out around like in the morning, I think so. As per IST, it will come at 8:30 in the morning. टेपे कहाँ है भाई? By the way, welcome to the stream, Krudal bhai. Welcome to the stream. Off we go. भाई अभी टेपे कहाँ पे है? कहाँ छुपा है? मैं तो इधर ही आ गया भाई। Need a surfboard? गिर फिर तो नहीं गया नीचे कहीं पे? ये है क्या? नहीं, ये तो कोई और ही है। Thanks, welcome bro. Do subscribe. Off we go. मुझे टेपे नहीं मिल रहा भाई। किधर है भाई ये टेपे? ओह, कटसीन है। Is that India time 8 in the morning? Yes, 8:30 in the morning actually. Oh. Hey guys. टेपे तो गया। What are you doing here? Hey guys, what you doing here? अच्छा। Just a moment. Let me get up. Okay bro, Krudal. It's weird. I don't know where all my strength's gone. Oh, right, yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war effort lately. Fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. I would never have dreamed I could. Sure. If only I were stronger still. Wow, so a long wait. Stronger I Indeed, am, bro. more It's I a can long do for wait. the resistance. I guess Wait a sec. 16 hours Where's to my go. secret weapon gone? 16, no, not 16. Around 14 hours to be precise. 14 hours to go for the update. From now, where in your region it will come around in 14 hours. Approximately, it will come in 14 hours. लाइव स्ट्रीम पे जो भी नहीं आ रहा है सब्सक्राइब कर देना। Well, let me focus on the game a bit. I'm skipping the Archon quest seriously. Like I'm not paying attention to the dialogues. If I only okay. The more I can do for the resistance. Wait a second. Wait a second. Okay. It wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. I met these mysterious people. Said they were with our supporters. They gave it to me and said that as long as I have the will
to become stronger. His secret weapon will answer my call. Just a second, let me check on this. अलर्ट नहीं आया यार, ऐसी सब्सक्राइबर बढ़ गया उसमें। अलर्ट नहीं आया, कोई सीन है इसमें आई थिंक तो। मुझको देखना पड़ेगा ये अलर्ट क्यों नहीं आया यहाँ पे। The will to become stronger, this secret weapon will answer my call. It's just like a vision, isn't it? Of course, I've never used a vision, so I wouldn't know the difference. Delusion. Oh God. That doesn't sound very good. So, what's the difference between a delusion and a vision? Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. Sorry. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Teppei. बेचारा टेपे। Hey, where are you going? Hey! इसको क्या हुआ ट्रैवलर को? ओके, एक और क्वेस्ट कंप्लीटेड। वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। जो भी नया आ रहा है वेलकम टू द स्ट्रीम। सब्सक्राइब जरूर से करना यार, सब्सक्राइब जरूर से करना। और जो भी स्ट्रीम पे रहा है चैट वैट करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आता। नहीं तो कोको से बात करना है। How's Teppei's condition? I have put out the order to seize all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field कल hospital अपडेट to आ तो monitor रहा है their वैसे, condition. मतलब न्यू बैनर आएगा। I guess so. The new banner will come at 3:30, or will it come at 8:30? I don't know actually. A little bit of confusion. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? No, it's too dangerous. The Sakoku decree is still लड़ाई in होने वाली है भाई force, फिर से। so their delusions must be produced within भयंकर लड़ाई Inazuma's हो रही है। borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made.
but it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take... Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है, अब ठीक है। कंट्रोल काम नहीं कर रहा था मेरा, पता नहीं क्यों। Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. अच्छा। I'm not going to stop you, but please, be careful. वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, जो भी नया आया है वेलकम टू द स्ट्रीम। जो भी नया ज्वाइन कर रहा है यार, डू सब्सक्राइब। चैट भी कर सकते हो, एटलीस्ट मैं बोर नहीं होऊंगा यार। चैट वैट किया करो, चैट में जो है चैट किया करो, बोरिंग नहीं रहता फिर सीन। We can interact. We have lost too many and courageous time fighters pass already. till the I update don't want comes. to lose you too. Huh? You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine. ट्रैवलर तो भाग लिया भाई, ट्रैवलर तो भाग लिया। अब कहाँ जाना है? अरे भाई फिर इधर क्या है बे? फिर इधर से जाना पड़ेगा पूरा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से चले जाता हूँ, शॉर्टकट पड़ेगा। यार आर्कन क्वेस्ट में ना मेरे को कभी कभी बोर लगता है, जैसे कि इनोजिमा का क्वेस्ट इतना पसंद ही नहीं आ रहा, इतना पसंद ही नहीं आ रहा मेरे को ये। हद से ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। पता नहीं किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी किसी को, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओए एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे नहीं मर जाएगी भाई, एक सेकंड। ओ बच गई। तो क्या कुछ स्टैमिना भी नहीं है, जाऊँ कैसे मैं वहाँ तक? प्लीज 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 पहुँच जा भाई, पहुँच जा। बढ़िया, लेट्स गो। चढ़ना पड़ेगा यहाँ से वापस। अब किधर जाना है? अबे यार चढ़ जा भाई, तो यहाँ पे रुक, स्टैमिना बढ़ा ले अपने, मरमुरा जाएगी नहीं तो फालतू की। स्टैमिना बढ़ा ले। Need a surfboard? तो नया क्वेस्ट अनलॉक हो गया। हाँ बना रहे हैं भाई। पक्का नीचे का ही बन रहा होगा, यहाँ तो नहीं बन रहा।
लेकिन रुको पहले मैं ऊपर ही चेक करके आता हूँ, बेटर ऑप्शन यही होगा। फिर नीचे नहीं रहा तो नीचे मैं वापस आ सकता हूँ, तो फिर ऊपर का सीन हो जाता है। पूरा एरिया चेक कर लेते हैं। वो तो श्राइन ऑफ डेप्थ है, यहाँ पे नहीं होगा। ये कुछ सीन है क्या यहाँ पे इसका? ठीक है चीज़ है। यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इधर पे बन रहा है। ओ मैं तो एरिया से बाहर आ गया थे। रुको रुको, इनको मार देते हैं एक बार। अरे यार मेरा माउस अटक रहा है, माउस अटक रहा है। वेट वेट वेट, अटक रहा है माउस कहीं पे। आप ठीक है? ये सिलिया में ले जाएगी क्या? चलो चलो चलो। अब मतलब क्या है इसका? करना क्या है हमें इसमें? इस एरिया में तो है ही नहीं है, कहीं और पे ही है आई थिंक तो। नीचे का भी ये पूरा पूरा एरिया है ना, यहाँ पे हो सकता है। यहीं पे होगी। हाँ हाँ ये रहा, देगा देगा जॉर्ड और वॉट, क्या बात है। क्या लड़ना पड़ेगा इधर अंदर जाके भाई? फिर तो सीन है। चलो ट्राई करके देखते हैं अगर हम मार पाए कि नहीं। लेट्स ट्राई अगर हम मार पाएंगे कि नहीं। किधर जाने का है? अरे अरे भाई, अरे 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 क्या सब ये ओए मार रहे हैं। अरे मैंने फर्स्ट मार दिया मुलानी का। नहीं भाई इधर कितने सारे हैं, कैसे मारूं तुम को? नहीं हो रहा भाई, इन पे कुछ असर ही नहीं हो रहा डैमेज। डिया बचा ले, डिया बचा ले। अब आया ना डैमेज। दो गए। इसको भी मारना है। नहीं यार मर जाना भाई, मर ना। क्या हो रहा है? इसकी अल्ट कब आएगी भाई? इधर कुछ तो सीन है भाई, कहीं से कुछ टूट फूट के गिर जाएगा सिर पे, मर जाऊंगा मैं। नीचे जा रहे हैं। ओके ओके, डोर ऑफ रिजरेक्शन। ठीक है, मतलब अपन जिंदा रहेंगे और मर भी गए तो नो वंडर।
डैमेज तो आया ओए 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 किसके मार रहे हैं साले किसको मारूं भाई किसको छोड़ूं किसको मारूं भाई क्या डैमेज आ रहा है क्या आ रहा है डैमेज ओए छोड़ दे मार मत छोले हाँ अब पीछे से मार साले मर गया ना क्यों पीछे से मार हर बार काम करता है यार ठीक है ये टूटने वाला है क्या एरिया ऐसे दिखा रहे हो भाई ओए उसका डैमेज नहीं आ रहा मेरे में वो वाला है ही नहीं कैरेक्टर में कैसे करूं हेलो मेरे तो वो कैरेक्टर ही नहीं है कैसे करना है अरे शांगलिंग भी मर गई भाई अरे भाई हील दो यार मेरे को बस्ट का है इसका हील कर दे यार फट से भाई एक फटका मारा उसने अलग टाइप कर दी मार को कुछ हुआ नहीं ऐसे गए पहले इसका शील्ड तोड़ना पड़ेगा हाँ टूट गया बेटे मर गया ना एक बार में क्यों कॉल नोटिस क्या चीज है ये कॉल नोटिस Need a surfboard? अब कहाँ जाना तो यार इसको खाना खिला देता हूँ भाई 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 इधर तो सीन है ओए ओए जंप करते हुए ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ले लेता हूँ ना यार चेस्ट बाद में मिलेगा थोड़ी है पीछे भी एक चेस्ट था यहाँ पे एक चेस्ट था यार कहाँ पे ये रहा गाइस जो भी नहीं आ रहा है स्ट्रीम पे लाइक कर देना भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब करोगे तो नाम तो आज शायद नहीं आएगा क्योंकि अलर्ट मैंने आग दिया है भाई डिया लेके चल भाई चुपचाप से डिया लेके चल भाई इधर तो मैकेनिज्म ही सब अलग है भाई किधर जाना है जाना कहाँ अब इसमें लेट्स गो इधर ओए आराम से क्या करना है कूदना है इधर कूद गया भाई यहाँ पे एक और है नहीं यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ मैं इधर आया क्यों फिर ओ ये खुलेगा क्या गेट अब खुल जा सिम सिम लेट्स गो खुल गया गेट अब क्या करना है भाई इधर भयंकर फाइट होने वाली मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है नीला नीला हो रहा है सब ओए ओए बड़े वाले आ गए बड़े वाले मुस्टंडे आ गए वो इन पे शील्ड नहीं है पहले बोलना था ना अबे आ गई बस मोटे की शील्ड आ गई लपेट देगा वो दो गए एक लौता बच्चा है
भाई मुक्का मत मारियो मेरे भाई मार मत मेरे भाई, मार मत प्लीज। मेरा अच्छा भाई है ना, मार मत। अब ये तो लपेटने के फिराक में है भाई, हथौड़ा लेके आ रहा है मारने, और का हथौड़ा लेके आ रहा है। ये भी मार दे, ले बेटे। अब क्या करेगा, हथौड़ा अटक गया तेरा, हथौड़ा उठा ले पहले। तो इस पे डैमेज ही नहीं आ रहा भाई, डैमेज ही नहीं आ रहा है। अरे भैंस की आँख, डिया को भी रेल दिया डिया को, रेल दिया भाई, डिया को रेल दिया। ले साले और तेरी भैंस। मैं गलत एलिमेंट यूज कर रहा हूँ ना, पता है मेरे को, है ही नहीं और कुछ मेरे को भी। अरे भाई मत मारो। अबे वैसे वो है ना रिस्पॉन, ठीक है ना, अगर एक बार नहीं मार पाया दूसरी बार आके मार के जाऊंगा। क्या चाहिए, क्रायो चाहिए ना इसको मारने के लिए। तो यार खाना ये रहा। ये अच्छा है कि ये अच्छा है? हाँ ये डिलीशियस है भाई, ये ज़्यादा हेल्प देगा। दो खिला दो मुलानी को बस, 10% ऑफ एचपी मिलती रहेगी। पूरे भैंस पे अरे मैं भूल गया भाई, मेरे 2 कैरेक्टर डेड है। 1 2 3 साउंड आ रहा है क्या मेरे यहाँ पे? भाई पूजा है ना, तो वो बज रहे हैं, ढोल बजने चालू होगा, शाम हो गया ना, ढोल वोल बज रहा है, सब साउंड आ रहा है, तो थोड़ा कोप अप कर लेना गाइस, ज़्यादा नहीं आना चाहिए वैसे। अरे ये तो मार रहा है, मर ना रहा। क्रायो होता ना मेरे पे अभी तक ये मर गया होता, कब का मर गया होता ये। चल साले चल, अब तो तेरी मृत्यु बकती है। ओए ये नहीं था भाई, ये नहीं था स्क्रिप्ट में, ये थोड़ी था यार स्क्रिप्ट में। भाई ये तो गलत बात है, स्क्रिप्ट में तुम लोग रखते नहीं हो चीज़ों को, अचानक से आके बोलते ये इसको मारो। अब कैसे मारूंगा इसको? अब लेट्स गो भाई, 2 डैमेज पड़ा है मेरे को। इधर साले सब शील्ड वाले आदमी है ना। डिया को जिंदा कर लूँ क्या? ये खिला देता हूँ डिया को, कम से कम जिंदा तो हो जाएगी आराम से। कोई सीन नहीं है, मार लेंगे अपन। अब आया ना डैमेज, अब आया, टूट फाड़ के नीचे बेटे। ओए भयंकर डैमेज आ गया भाई इसका। अब तो मर जा साली। हाँ मर गई। ओ भाई वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। जो भी नहीं आ रहा है डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब कर देना यार। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ भाई, इसको मारते मारते हालत ख़राब हो गया मेरा। जो भी नहीं आ रहा है सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक भी कर देना। यू एक्चुअली फाइंड दिस प्लेस, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशन साली पाइमन, तू तो आई नहीं बचाने। हालत टाइट मेरा हो गया उधर उसको मारते मारते। बताओ इधर बोल रहे हैं Senora and child. I didn't know you and my 2 least reliable colleagues were Balladeer। acquainted. कौन है भाई ये? I'm the Balladeer, number 6 of the Fatui वॉन्डरर है ये तो अपना। Delighted to meet you. वॉन्डरर की एंट्री होती हुई दोस्तों। वॉन्डरर की एंट्री होती हुई। लेट्स गो। क्या हाल है? नंबर 6 ऑफ द 40 Harbingers। ठीक है। So many visitors today. To what do I owe the honor? Oh, so that's what this is about.
साले तेरे को तो बाद में लपेटेंगे। I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. अच्छा, how this looks, but I am just here to follow I'm orders. obviously not the mastermind behind this. साले राइडन Aren't के you पीछे पीछे काम supposed to करता be है pretty tough? साले घमंडी। What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. Didn't have you down as being so weak. How can you say this is nothing? How can साले you call it नथिंग, मेरा anything हालत खराब हो more? गया इधर उसको It's मारते the way of मारते, the world. खाना खत्म हो गया मेरा। Human life is नथिंग बोलता है worthless. साले। इसको तो लपेटेंगे भाई, इसको तो लपेटेंगे, एक दिन रुको ना, फाइट करवा दे इसके साथ, लपेट देंगे इसको। ये कौन है? They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambition. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. Our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market. ठीक है ठीक है ठीक है। For just a small price, they get the feeling of controlling the world, trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? भाई ये तो बिजनेस कर रहा है बंदा। The Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? यही तो है 30 मार्क। हाँ, इस पूरे सीन के पीछे छुपा रुस्तम साला। हाँ। From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause, just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुकना यार, कहीं नहीं जाना, एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड में आया बस, जस्ट एक सेकंड। आ गया, चलो चैट लगा लिया मैंने, चलो। The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Teppei. No! ओ कटसीन आ गया, कटसीन आ गया, फाइट होने वाली है भयंकर। अबे साले काला जादू करता है। अरे यार गलत बात है यार, लड़ना नॉर्मल आके। That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills his factory, and it feeds on your anger. अबे ट्रैवलर क्या? याइमिको क्या कर रही है यहाँ पे? क्या भाई ये लोग सब मिले जुले हैं क्या? सब मिलके यार ट्रैवलर को ही मार रहे हैं, गलत बात है। Repeat after me. 3, 2, 2 1 3 2 3 Come on. Okay, that's positive.
Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. रुको यार, इसको मैं प्लेइंग पे लगा देता हूँ, स्टोरी तुम लोग देखते रहो. What if I पानी पीता हूँ told तब you तक. it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the Balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the Balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleagues' behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that's Ungonamiya Kokomi. She really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person. But alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, मेरे को I'm लगा only गुरुजी telling you लिखा है this भाई. to stop you worrying, Lol. so that you can focus on something I need you to do for me. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. एक सेकंड.
This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhongli was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? ये भी बात है. Just a second, guys. Just a second. चलो जी, क्या बोल रहे थे? बच्चे की तरह एक्टिंग कर रही है. The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance. You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing, that you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. अरे भाई मेरा फोन गिर गया, एक सेकंड. रुको. हाँ, अब ठीक है. स्टैंड पे लगा के रखता हूँ. चैट्स दिखती रहेंगी मुझे. लैंडस्केप पे कर लेने से और अच्छे से दिखता है क्या? नहीं, यही सही है. एक सेकंड, इसको पूरा मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ. अब सही है. अब पूरा चैट ही दिख रहा है मुझे. बढ़िया. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. हो गया? Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Okay. Anti-Raiden Shogun training. सही है. करना है क्या चाहिए? करना है क्या इसको? अच्छा, एक सेकंड में पहले हील करके आता हूँ. कितना दूर जाना है अपने को? यहाँ जाना है. स्टैचू ऑफ द सेवन क्यों नहीं है भाई यहाँ पे? ये रहा. जो भी स्ट्रीम पे आ रहा है गाइस ज़रूर से लाइक कर देना. और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही करना, वरना तुम 50-50 हारोगे.
The most important part of going out to have fun is सब्सक्राइब करने से लक मिल जाता है भाई। So just show up and I'll handle it. लक मिल जाता है सब्सक्राइब करने से। अपने को जाना है अभी इधर, लेट्स गो। आज मैं सोच रहा हूँ एक्ट 3 को कंप्लीट कर ही दो जितना हो सकता है, और कल थोड़ा जल्दी स्ट्रीम करूँगा यार। आज वो ओवरले वगैरह सब ऐड करते करते ना, मतलब इतना कुछ करते करते थोड़ा टाइम चला गया। किधर जाना है? नीचे? लेट्स गो गाइस, और 1 लाइक चाहिए हमें 10 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए, और 1 लाइक चाहिए हमें 10 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए। ज़्यादा आगे आ गया क्या? नहीं, और जाना है। और 1 लाइक चाहिए गाइस 10 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो कर देना। यहीं पे नीचे में हो रहा। We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. अच्छा। That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. क्या करना है इधर अभी अपने को? इवेंट द डिवाइस, ठीक है। भागना है, मतलब इधर उधर भागना है ना, बस यही है ना बात। भागना तो आता ही है। इजी वाला करेंगे। ओए ओए ओए, अरे डॉज करना है ना, तो ऐसे बोलो। वेरी गुड। हो गया चैलेंज फेल्ड। कैसे चैलेंज? अच्छा 1 मिनट तक हमें बचे रहना है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा वो 10 बार हमें हिट करेगा, मतलब वो हिट वो करना है। ठीक है भाई, इसको तो कर लेंगे फटफट। बढ़िया। Need a surfboard? 2 हिट लग गए भाई आराम से। चार हिट। नहीं 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 नहीं, ओए अरे यार लास्ट हिट लग गया फिर से। डिया लेके आना पड़ेगा क्या? डिया के पाओ वो है बहुत फास्ट। अब सही है। Sun's out, guns out. Sucks that I got so much work to do. लो जी, 1 हिट लग गया। हो जाएगा इस बार मेरे साथ। भाई ये बैक टू बैक ये जो 2 मारती है ना लास्ट में, ये बड़ा वो है। प्लीज हो जाना इस बार। हो गया, लेट्स गो। याई मीको के पास चलो बात करने। कहाँ है याई मीको? मेरी। What a workout! So how come you know so much about the Raiden
Shogun. सब पता है भाई आई मीको को, ऐसे कैसे? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's familiar. What? Like Devalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed, but... It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. अच्छा. In your dreams. Huh. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. अच्छा. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of Euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal familiar is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for anti-Raiden Shogun training phase 2. There's a part 2? क्या भाई फेज 2 भी है क्या इसका? कितना काम करवाओगे? हार्ड वाला करना पड़ेगा क्या अब? हैं? अब कौन थे ओपोनेंट? ये यार एक तो डैमेज आ रहा है भयंकर इसका, ऊपर से अलग बकैती चल रही है इनकी. उसको डिफीट कर दो, उसको डिफीट कर दो. अरे ओए डैमेज मत दे साले, साले डैमेज मत दे मेरे को एकदम. जा भाई, जब मुलानी मर गई ना उस टाइम तो खत्म है सीन, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है अब. ये आ गया एक तो यार, और 3.5 फुट का नहीं, ये लंबा है ना. भगते रहो भगते रहो भगते रहो. मैं भूल ही गया था कि ये भी है इधर, ये डैमेज. ओए लो जी, मुलानी मर गई. मैंने मुलानी को हील भी नहीं किया था एक्चुअली, गलती तो मेरी ही है. बचना कैसे है तेरी भैंस के? जांगलिंग से कम हो जाएगा. हो गया जी एंटी शोगन ट्रेनिंग. मैं रेडिंग बोल रहा था, बताओ. ये करने के बाद मेरे को मुलानी को एचपी दे के आना पड़ेगा. यही होता है जब तुम्हारे टीम में एक अच्छा सा कोई हीलर ना हो. You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? वेस्ट ऑफ टाइम ही तो है भाई. पहले से पता है मुझे, ये जानबूझ के कर रही है. I know what I'm doing.
You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Do you? हाँ भाई ट्रैवलर बता, डू यू? थैंक्स भाई जिसने भी सब्सक्राइब किया। मैंने देखा नहीं था, सॉरी। जिसने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू। अलर्ट्स में ऐड कर दूंगा कल, टेंशन मत लो, तो पता चल जाएगा। Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. ट्रैवलर के पास बहुत शक्तियां हैं भाई, ट्रैवलर को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। I don't mean to belittle them. मशरूम पिज्जा बनाने से लेके चाइल्ड को मारने तक सब कुछ कर रखा है इसने। चाइल्ड को मारा है उधर, क्या नाम है उसका, ड्वेलिन को। यहाँ पे भी किसको हराया अभी, नाम नहीं पता मेरे को। वॉन्डरर को तो नहीं हराया, किसको हराया हमने, नाम भूल गया मैं। In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden you're entertaining guests? Hyman's really struggling to understand how you work. हो गया? अभी भी जाना है? चलो। इसके बाद अपन वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसके बाद अपन करेंगे, रुको पहले हील करके आने दो बे मुलानी को। अबे यार कटसीन, फिर से कटसीन चला दिया। इसके बाद अपन को वो भी करना है ना, आज का आर्टिफैक्ट डोमेन। In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? One must do. Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryou Commission from the Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryou and Kanjo Commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the Tenryou and Kanjo Commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean,
inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize him! Affirmative. क्या वे पकड़ के ले जाएंगे क्या ट्रैवलर को अब? गलत बात है। It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Ugh. Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside. As you wish. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Oh, it's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the Shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. सही है भाई फिर तो. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. He will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. पूजा सारा को वापस भेज दिया. That was so scary. Paimon wasn't expecting to run into Kujo-Sara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go? Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her.
Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do though? We only have... If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. चलो द सर्वेंट्स पाथ ये भी हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ अब करते हैं हम आज का अपना, यहाँ तक रखते हैं इसको। नया वाला बाद में शुरू करेंगे, ये वाले एरिया में बाद में करेंगे शुरू। अभी अपन करते हैं, क्या करते हैं अभी हम करते हैं अपना रेजिन यूज़ कर देते हैं। तो पहले तो चलो यार, मेरे को एनिमो फ्लाई चाहिए, तो क्रिस्टल जमा कर लेते हैं पहले। 5 चाहिए मेरे हिसाब से, 4 5 जितना भी मिल जाए। उड़ जाते हैं ना भाई, ये वो सीन है भाई इधर। ले एक उड़ गया, 2 उड़ गए एक्चुअली। ठीक है अपन चलते हैं अब इधर। यहाँ पे तो घूमने पे ही नहीं मिलता भाई, घूमते ही चले जाते हैं। स्टैचू ऑफ द 7 क्यों खुल गया? एक को ले सकता हूँ क्या मैं? इसको ले सकता हूँ मेरे साथ। मिला? नहीं मिला? नहीं मिल गया, मिल गया। और यहाँ भी मिलते हैं, ये शॉर्टकट एरियाज हैं लेने के। ये रहा गुयून फॉरेस्ट के इस डोमेन में मिलता है। 4 रहते हैं यहाँ पे, 2 मिल जाए बस हो गया मेरा काम। आराम से क्या? अबे ये कहाँ से आ गया? मैं इसका हक दिया मैंने गाइस, सॉरी। एक और बार भाई, ये कलेक्ट करना ना मेरे को तो मतलब बहुत हार्ड लगता है भाई मेरे को, मेरे से नहीं होता। आरू विलेज के पास भी एक और था। आरू विलेज किधर? यहाँ से भगले भाई, मर मुरा जाएगा कसम से। आरू विलेज कहाँ है? सुमेरू में होना चाहिए। सुमेरू में आरू विलेज ये रहा, यहाँ पे रहता है स्टैचू ऑफ द 7 के पास। ये वाला आराम से कलेक्ट करना पड़ेगा, गड़बड़ी हुआ तो यार फिर फोन होने में टाइम लगता है। किधर है? ओके तो यहीं पे है। अरे उड़ गया कैसे भाई? एक ये रहा, चलो एक और मिला। एक वहाँ उड़ गया, एक वहाँ उड़ गया, कोई बात नहीं। जाके अब अपन कलेक्ट करके आते हैं। कहाँ गया? बुड्ढे के पास जाके हमें अब करना है कन्वर्ट कर लेंगे, कोई सीन नहीं है। ये रहा बुड्ढा। कितनी है मेरे पास? 4 है। एक तो होगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास है ही नहीं उतना रेजिन, तो मेरे को एक 20 वाला करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, 20 वाला करना पड़ेगा उधर। चलो आज एक साइड में देख लेता हूँ, ये वाला डोमेन आया है क्या? है मोलानी। ये तो मैं कर लूँगा एंड तक फॉर्म। इसको करने के लिए क्या चाहिए? ये वाले चाहिए, वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ऑप्शन कर लेंगे अपन। एंड टैलेंट में ये मेरे पे है, ये नॉर्मल का चाहिए। ये बुक आज नहीं खुला है ना? नहीं आज ट्यूसडे, आज नहीं है। ठीक है, रैप्टर भाई को बुला के देखते हैं अगर खेल रहे हैं तो। अरे रैप्टर भाई तो ऑफलाइन चले गए। कोई नहीं, रैंडम लोगों के साथ कर लेंगे, क्या सीन है।
रैंडम लोगों के साथ कर लेंगे अपन, नो इश्यूज। डोमेन फार्म करो भाई बैठ के मस्त एकदम आराम से डोमेन फार्म करते रहो। हाँ क्यों नहीं रहे बे? ये वाला था कि कोई और सा? यही था ना ऑब्सिडियन कोडेक्स का, ये तो रहा। कोऑप गेम इज लोडिंग। क्यों भाई? मैं किसी और के में घुस गया क्या? हैं? लो भाई, मैं किसी और ही के वर्ल्ड में घुस गया। ठीक है, चल जाएगा काम। मुलाली ले ली है हमने। बंदा चीची रख रहा था उसमें। ये भी सही है, किसी और के वर्ल्ड में घुस जाओ। है बढ़िया है। चलो अब करेंगे अपन फार्म। स्टार्ट कर भाई, स्टार्ट कर। ओए चालू कर दिया। Remember, help comes first. Amazing! Your soul! अरे यार मैंने बिल्कुल वट्टा मार दिया। देख देता हूँ भाई, अगर कोई आ जाए तो बढ़िया ही है। प्रमोशन करना हर जगह अच्छी बात होती है भाई, प्रमोशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा नहीं कौन से पीस मिले मेरे को। बंदा जेंट्रो बर्निंग टीम चला रहा है, सही है। भाई कितना डैमेज आ रहा था तो पता ही नहीं, मैंने 41 सेकंड में शेयर हुआ। क्या मिला? बंदा ठीक है, बंदा नहीं ठीक है, बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, बाद में यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ा तो। HP सर्कुलेट ऑलवेज काम आता है भाई। सॉरी सर्कुलेट नहीं, क्या मिला था? गॉबलेट क्या था? देखा नहीं मैंने। मेरे को ज़िलोनियन के लिए अच्छे पीसेस चाहिए भाई, मिल क्यों नहीं रहे? Taking a turn for the better. Locked up. Need a surfboard? Let's go. Let's go. लास्ट नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है ना, मतलब 20 वाला तो एक है ही अपना, वो हम यूज़ कर सकते हैं।
Bigger pill to swallow. Blasting at the moon! ओ ये क्या पीस मिल गया? ओ एक अच्छा पीस मिला है गाइस, एक अच्छा पीस मिला है। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, लेट्स गो। काफ़ी देर बाद एक अच्छा पीस मिला है भाई मेरे को। लास्ट अपना ही है आज के लिए। Remember, Off we go! Need a sir? Carving way! Off we go! चलो जी। बेकार। चलो हो गया। अब हमें बस कलेक्ट करने हैं सामान और फिर आज का काम कंप्लीट अपना। स्ट्रीम को यहीं तक रखेंगे आज के लिए आई गेस। आज के लिए यहीं तक रखेंगे स्ट्रीम को। चलो भाई यहाँ पे भी अपने प्रमोशन कर दिया है। हम जहाँ जाते हैं प्रमोशन वहाँ करते हैं। सही बात है नहीं? हाँ चलो चलो सिंगल प्लेयर में जाते हैं। कैथरीन से कलेक्ट करते हैं आज का सामान एंड बस फिर कंप्लीट। कल आ रहा है बैनर, कल करेंगे पुल। ज़्यादा पुल चाहिए नहीं मेरे को, 50-50 ट्राई करूँगा जिलोन पे, बट स्टिल 50-50 भी अगर लग अच्छा हुआ मिल जाएगा। नहीं मिली तो नाहिदा तो कंफर्म है भाई। अब नाहिदा तो कंफर्म है। ठीक है चलो भाई चलो। कैथरीन कैथरीन के पास चलते हैं। Ad Astra Abyssos. Thank you for complete. Thank you for completing. Ad Astra Abyssos. ये कंप्लीट कर लेते हैं। इनको मैं लगाना भूल गया। इनको मैं लगा देता हूँ ना उधर। यहाँ पत्थर नहीं मिल रहे यार इन तीनों जगह में। पत्थरों की बहुत ज़रूरत है बे। मोरा से थोड़ी काम चलेगा, पत्थर भी तो चाहिए। पत्थर लौटा दो हैं। अबे सॉरी एम्बर कोई है ही नहीं क्या? और इसके लिए एक सेकंड में यहाँ पे क्यों लगाऊँ? फिर रिकॉल कर लेता हूँ ना। इनाजुमा में अगर कोई कैरेक्टर का बोनस मिल जाए। नेटलैंड में भेज देता हूँ। नेटलैंड में भी तो है। कचीना का तो बोनस होना चाहिए नेटलैंड में। कचीना का क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, एम्बर को ही भेज देते हैं। हो गया, हमने सब कलेक्ट कर लिया भाई। और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। तो हमें जाना है उसके पास, वो जो ऊर वगैरह सब बनाता है, इस वाले में जाना है हमें। टेलीपोर्ट। कल तो भाई पूल करेंगे स्ट्रीम पे, सो आ जाना सर टाइम। 3:30 बजे अपना टाइम रहता है डेली। तो ये काम आता है भाई, भयंकर काम आता है ये।
ये बना दो, ये भी बना दो, ये भी बना दो, ये वाला रहेगा भाई। हो गया सब कुछ, और कुछ बचा है मुझे तो नहीं लगता। अचीवमेंट्स ये वाला मिला है। प्रीमो काउंट, चलिए ज़्यादा तो नहीं है बट 6727 ठीक है। गोकू भाई क्या कर रहे हैं हमारे, एक बार देख लेते हैं। चलो टैलेंट बढ़ा है, 4 पे ही है। वेपन 50, कैचिंग को कुछ किया है क्या? नहीं, इसने का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, इसमें कर लेते हैं। अच्छा चलो ओके, तो आज स्ट्रीम यहीं तक रखते हैं। आई विल सी यू गाइस टुमारो, मिलते हैं कल, ठीक है। सो आज स्ट्रीम यहीं तक रखते हैं और अपन मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। तो भाई जिन्होंने का पूल्स करेंगे, What you see is what you get, जिन्होंने and whether you take on the अच्छा challenge सपोर्ट है is काफी यार, ऐसा entirely मतलब up to you. मस्त सपोर्ट है, ऐसा मस्त सपोर्ट है। एक सेकंड गाइस, कल नया थंबनेल भी लगाएंगे। अगर लग अच्छा हुआ तो भाई 09 मिल जाएगी, वरना तो देखते हैं, नाहिदा कंफर्म हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अपन मिलते हैं कल विद अ ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम। तब तक के लिए बाय बाय। We mercs have one simple rule. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking.